Good afternoon, everyone. I am Sakshi Rana from Department of Electrical Engineering from IIMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, we are going to discuss about the batteries. Everyone knows about the battery, and everyone uses that in your daily life. There are some applications of the battery. These are the some applications of for using battery. As we know, nowadays EV is trending, and in that car or bike or scooties we use the battery, and in laptops, mobile phone, watches, smart watches, camera, these all are the applications of batteries. In these type of products, different types of battery uses. There are some type of batteries that we learned today. Now, first of all, what is battery? Basically, a battery is a device that can convert chemical energy into electrical energy, right? It stores the charges of charges and that convert into electrical energy. In the battery, the reaction take place between chemicals, and that type of chemical is known as the electrolyte. Uh, in this, there is electrochemicals also takes place. In this, electrodes and electrolytes are take place in the battery. This is the symbol of the battery. Here, there are two terminals that are anode and cathode. Positive terminal is known as for the cathode, and the negative terminal is known as the anode. And the device which we want to use, that may be a bulb or maybe any device like a camera, and all that is used, that is connected between the cathode and anode. And with the help of this device, the bulb or lamp can glow, right? Due to the process of electrolyte, there in this charges move from anode to cathode, and the current flow of current starts. Electrodes and electrolytes. Next is electrodes and electrolytes. What are electrodes and what are electrolytes? There are two terminals of the battery, that are the cathode and the anode. Cathode is known as a positive terminal also, or we can say that positive terminal is known as the cathode, right? Uh, in the chemical reduction occurs at the positive terminals, right? Gain electrons. That means the electrons that we receive from the negative terminal, that goes according to the positive terminal, right? Anode is known as the negative terminal, or we can say that negative terminal is known, so also known as the anode. In On the anode, the chemical oxidation occurs. Means on the terminal of anode, the electrons losses, and which electron losses on the negative terminal that are gained from at the positive terminal, right? Electrolytes allow what allowed to electrolytes? Ions to move between electrodes and terminals. Electrolytes basically क्या allow करता है? Electrolytes जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स में जो भी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स हैं, रोड्स हैं, उनके बीच में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, उसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ आयंस और फ्लो ऑफ चार्जेस। तो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से वो मूव कर पाता है, राइट? करंट टू फ्लो आउट ऑफ द बैटरी टू परफॉर्म वर्क, जिसकी वजह से जो चार्ज होता है, दैट आर द केमिकल चार्ज विच हैव टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो बैटरी से बाहर फ्लो होता है। बैटरी से बाहर फ्लो, दैट मीन्स कि उसे जो भी वर्क परफॉर्म करना है, लाइक आपको फैन चलाना है, ट्यूबलाइट जलानी है, या लाइक कोई भी डिवाइस है, रिमोट है, या फिर आपका टीवी, सॉरी, कोई भी बैटरी है, उसे चलाना है, तो वो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है। दिस इज द बैटरी ओवरव्यू। बेसिकली बैटरी कैसी दिखती है? दिस इज द ड्राई सेल, यू कैन से दैट। इन दिस, जो इसमें टॉप पे होता है वो एक स्टील का कैन होता है। कैथोड, बीच में एक सेपरेटर लगा होता है जो कि एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है। एंड बीच में एक डिवाइस होती है, करंट कलेक्टर ब्रास पिन, जिसे करंट कलेक्टर ब्रास पिन कहते हैं, जो कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो भी करंट और स्टोर होता है वो उसे कलेक्ट करता है। Battery has metal or plastic case. First of all, according to the battery overview, बैटरी के बाहर क्या होता है? मेटल या प्लास्टिक का एक केस, केस इन द सेंस कि एक बॉक्स टाइप बना होता है।
इनसाइड केस आर कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोड्स। उस केस के अंदर ही क्या होता है, कैथोड भी होते हैं, एनोड भी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। और एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए हम उसमें क्या यूज करते हैं, सेपरेटर। सेपरेटर्स क्रिएट्स बैरियर बिटवीन कैथोड एंड एनोड। बेसिकली सेपरेटर वर्क्स एज अ बैरियर, राइट। करंट कलेक्टर ब्रास पिन इन मिडल ऑफ सेल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू आउटसाइड सर्किट। जो बीच में एक क्या होती है, करंट कलेक्टर ब्रास पिन होती है जो कि चार्ज को कलेक्ट करती है जिससे कि वो आउटसाइड द सर्किट करंट को फ्लो करा सके, ठीक है। Basically in the battery there are two types of cell, right? Primary cell or the secondary cell. This is the block diagram of the primary cell. uh, One use non rechargeable disposable. Primary cell क्या होता है, primary cell is used for once. It means कि हम जो भी प्राइमरी सेल होता है उसको सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं, राइट एक बार हम प्राइमरी सेल को यूज कर सकते हैं। आफ्टर जब भी प्राइमरी सेल आपका डिस्चार्ज हो जाता है, आफ्टर दैट वी कांट यूज दैट, ओके। इट इज नॉट अ रिचार्जेबल बैटरी। केमिकल रिएक्शन यूज्ड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्स नहीं हो सकती। रिवर्स इन द सेंस कि लाइक एनोड पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद उसमें कुछ डिस्चार्जिंग होती है, बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है, फिर उसके बाद दूसरी साइड क्या होगा कि बैटरी को दोबारा से चार्ज करने के लिए वही रिवर्स प्रोसेस होता है। बट जो प्राइमरी सेल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। जो भी बैटरी आपकी एक बार डिस्चार्ज हो जाती है, आफ्टर दैट दैट बैटरी कैन नॉट बी used when long periods of storage are required, lower discharge rate than secondary battery। secondary battery से ये बहुत कम डिस्चार्ज होती है। यूज इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, लाइक स्मोक डिटेक्टर में यूज इसका यूज किया जाता है, फ्लैश लाइट्स में इसका यूज करते हैं, या फिर रिमोट कंट्रोल्स। लाइक आपको टीवी के लिए रिमोट चाहिए होता है, एसी के लिए रिमोट चाहिए होता है, आजकल फैंस के लिए भी रिमोट चलते हैं, लाइक बीएलडीसी फैन आपके हैं तो उनमें हमारा रिमोट वर्क करता है। तो उनके लिए आपका क्या होता है, प्राइमरी सेल्स की नीड होती है, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम कंपेयर टू द सेकेंडरी बैटरी, राइट। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल basically it is a rechargeable battery. Primary cell is non-rechargeable battery that cannot be charged again and again, but secondary cells are the rechargeable battery that can be used, uh, that can be charged again and again once it's discharged, right? Reaction can be readily reversed। reaction क्या होती है, reverse होती है। अगर reaction can be reversed then this cells can be charged। if reaction will not be reversed then how can cell be charged? No, that is not possible, right? Similar to primary cells, except redox reaction can be reversed. It looks like a primary cell, and it is similar to the primary cell, but it's different because it can be its reaction can be reversed. That's why it can be charged। Recharging electrodes undergo the opposite process than discharging। Recharging क्या होती है, जो opposite process to the discharging। discharging में क्या होगा कि आपकी जो भी एनोड और कैथोड के बीच में जो भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने लगेगी, तो जो भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में आपका क्या होगा, लाइक जैसे आपकी किसी भी बैटरी की हम बात करते हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। तो H2SO4 में वाटर की क्वांटिटी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जैसे जैसे उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट फ्लो करेगा तो उसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ने लगती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगता है। जैसे जैसे वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था, एसिडिक नेचर था, तो वो बेसिक में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। बेसिक में जब वो कन्वर्ट होगा तो उसका एनोड जो होता है या उसके जो भी टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो उनके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे व्हाइट कलर की लेयर उसके ऊपर आना स्टार्ट होगी तो वो क्या होगा, आपका डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। दैट मीन्स बैटरी इज डिस्चार्जिंग, ठीक है। और जैसे जैसे फिर दोबारा से यही प्रोसेस उल्टा होता है, वो अपोजिट करते हैं, इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, तो वो जो व्हाइट लेयर की लेयर होती है बैटरी के ऊपर, उसके टर्मिनल्स के ऊपर, तो वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स बैटरी इज चार्जिंग, राइट। Recharging electrodes undergo the opposite process than discharging, as we discussed earlier, that it is the opposite process of the discharging, and cathode is oxidized and produces electrons। कैथोड क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब बाय एनोड। तो जो एनोड कैथोड पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, एनोड पे जाते हैं। उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट।
Now we are going to some type of batteries that are nickel cadmium battery. First one is nickel cadmium NiCd. Basically it is known as NiCd battery. At the anode there are used cadmium hydroxide, that's chemical formula is CdOH2, and the cathode nickel hydroxide NiOH2. Electrolyte क्या होता है इसमें? Electrolyte basically that chemical that help to flow the charges between cathode and anode, that is known as the electrolyte. Electrolyte is potassium hydroxide, and in place of potassium hydroxide we can use the sodium hydroxide is also. Then the half reaction means at the point of anode or at the point of cathode, that is cadmium plus 2OH. एनोड पे क्या होता है, जो आपके OH आयन होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, तो क्या बनाता है? कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एज डी डिस्कस्ड अर्लियर, राइट। उसके बाद 2NiOH प्लस CD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो यहाँ पे ये एनोड एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या बनाता है? NiOH2 प्लस 2OH, राइट। आफ्टर दैट द कंप्लीट रिएक्शन इज टू, जो भी आपकी लेफ्ट साइड वाली टर्म्स होती हैं उनको हम एक साथ कंबाइन करते हैं, जो राइट साइड वाली टर्म होती है उनको एक साइड कंबाइन करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं बेसिकली, और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 2NiOH प्लस CD प्लस 2H2O प्लस विल बी इक्वल टू 2NiOH2 प्लस कैडमियम, कैडमियम का हाइड्रोक्साइड वो फॉर्म करते हैं। There are the overview of the nickel cadmium battery. There are the anode and cathode, and this is the separator that is used between the anode and cathode, due to which anode and cathode is differentiate from each other. This is the vent hole, spring loaded cap, nickel plated steel case, insulating washer. Next is the nickel cadmium battery is also undergoing, that is the maintain a steady voltage of 1.2 volt per cell until completely depleted. Means that it maintain 1.2 volt per cell, जब तक completely discharge नहीं होती तब तक ये 1.2 volt maintain करके चलती है, and have ability to deliver full power output until end of cycle. जब तक इसका साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये फुल पावर डिलीवर करती है, एंड हैव कंसिस्टेंट पावरफुल डिलीवरी थ्रू आउट द एंटायर एप्लीकेशन। जब तक इसकी एप्लीकेशन या जिस जो भी इसमें काम कर रहा है, जब तक इसके अंदर पूरी एबिलिटी रहेगी तब तक ये उसमें फुली डिलीवर करता है। वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। लोअर वोल्टेज पर सेल जो भी इसकी वोल्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। And there are some advantages of nickel and cadmium battery, advantages and disadvantages. If one thing have advantages, then there will be definitely some disadvantages also. That are this chemistry is reliable and operate in a range of temperature, tolerate abuse well and perform well after long periods of storage. And the disadvantage of the nickel cadmium battery are, it is 3 to 5 times more expensive than lead acid battery, and its materials are toxic, and the recycling infrastructure for larger nickel cadmium battery is very limited. It is limited, right? Next is the lead acid battery, that is the cheaper from the nickel and cadmium battery. We have studied that just now. That at the anode there are the porous lead, cathode lead oxide, electrolyte sulfuric acid or 6 molar of H2SO4. 6 molar means for balancing we have to use 6 molecules. At the discharging, now we are talking about the discharging condition. If lead oxide PbO2 plus with the 4 ions of hydrogen plus SO4 to aquatic, and the 2 electron will be released here, then it will perform that the lead sulfate plus 2 molecules of water. Electrode Pb lead plus SO4 to aquatic will be performed PbSO4 plus 2 electron. 2 electron here it will released, and it released 2 electrons, and here it will used. Next the condition is charging, and the charging and discharging conditions are just vice versa. Like there are formed PbSO4 plus 2H2O, then here PbSO4 plus 2H2O, it will perform PbO2 lead sulfate plus 4H. It means that white layer which is fixed on the electrodes that start to remove in the charging condition, right? These are the two conditions for the charging and discharging. This is the shape of the, or we can say the
block diagram of the battery, there are two terminals. There are the two terminals or electrodes that are the positive terminal and the negative terminal, or we can say that it is the anode or the cathode. There are vent caps. These are the cell connectors which connect the cell for that's why they can generate the more voltages. Positive electrode, lead oxide, negative electrode, that is the lead. Cell divider, basically it is used for divide the cells, and this is the protective case. We can it protects the cells, that's why we cannot touch the cells, or it will not harm to anyone. And electrolyte solution, that is dilute sulfuric acid, which is filled between the cathode and anode, which can take due to which the charges of ions can take place. Lead acid battery, the lead acid cells in automobile batteries are bed cells. In automobile battery, the lead acid battery is used, that are the bed cells. Deliver short burst of high power to start the engine. It is used for starting the engine in the automobiles. Battery supplies power to the starter and ignition system to start the engine. Basically, lead acid battery is used in the automobiles. That's why it can help to start the starter or the engine. Battery acts as a voltage stabilizer in the electrical system and supplies the extra power necessary when the vehicle's electrical load exceeds the supply from the charging system. These are the reactions of the chemical oxide battery that takes place between the charging or discharging conditions, or we can say that between cathode and the electrodes. That are the silver oxide battery uses silver oxide. In the silver oxide battery, that are used silver oxide. Positive electrode, that are the cathode. Zinc as the negative electrode. At the positive terminal, silver are used, and negative electrode at anode, we can say zinc is used, plus an alkaline electrolyte. Electrolyte is the alkaline, usually sodium hydroxide, NaOH, or potassium hydroxide we can use, right, at the alkaline. The silver is reduced at the cathode from AgI to Ag, and the zinc is oxidized from Zn to Zn2. The half cell reaction at the positive plate, at the positive terminal, or at the cathode, the reaction takes place. Ag2O plus H2O plus 2 electron. It means here 2 electron is absorbed, that are releases from at the other node. 2Ag plus 2OH reaction at the negative plate, and the Zn plus 2OH, Zn plus 2 zinc hydroxide plus 2 electron, it is reduced. Zn plus H2O plus Ag2O, ZnOH2 plus 2Ag, overall reaction anhydrous form, and zinc plus silver oxide will be equal to KOH plus NaOH zinc oxide plus 2Ag. This is the block diagram of the silver oxide battery. The silver oxide battery basically used in the cell of watches, like analog watch, or the cell of thermometer, or we can say the battery of the thermometer is the type of silver oxide battery. Steel cell cap, can, silver oxide positive electrode, electrolyte containing potassium hydroxide, that is in yellow color, zinc powder negative electrode, plastic insulator, steel cell cap, and steel cell can, that is used in. So these are the these all over about the battery, and thank you so much.